So in this session, we will start exploring what deep learning is. So it will be an introductory class as of today. So first of all, we all know that what is machine learning, right? मशीन लर्निंग से आप लोग पूरे familiar है. What is machine learning? Okay. So now uh, we know that AI has couple of branches, right? First of all, one of its branches machine learning, okay, which is the basic core part of AI, like how we train the machine to understand the data, to interpret the data and predictions. वो सारा होता है हमारा inside of machine learning. Okay, so the main concept जहाँ पे आपका AI gets evolved is deep learning. Okay, so deep learning is a main part of artificial intelligence. It's an upgraded version of machine learning where we use unstructured data with unsupervised learning to predict model and to uh, get some other interpretations from the data. Okay, so main AI comprises of, देखिए, AI AI has basically 2 to 3 topics. One of it is machine learning. Okay, and then we have deep learning, and inside deep learning we have first we have MLP. Okay, multi-layer perceptron. Okay, and then we have CNN, convolutional neural networks. Okay, in deep learning we have MLP, multi-layer perceptron, CNN, convolutional neural network, and RNN, recurrent neural networks. Okay, and RNN के आगे we have LSTM, and then we have something called GAN, generative. ज्वाइन हो गया पूरे. ओके, एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क्स ना पूरे कनेक्टेड है. Okay, so which is also called GAN is also called as generative AI. Okay, generative AI. So with the help of this GAN itself, uh, we have these topics जो हमारा chat GPT है ना, it is based on this generative AI. Okay, so उसका main backend part comes to the generative adversarial neural network, GAN. Okay, so to understand GAN and to understand all of these topics, we need to understand what really is deep learning. Okay, machine learning, you are familiar with machine learning. We train some data and we predict some outputs from the machine learning. But deep learning is somewhat complex and different from machine learning. So the first and major part of deep learning is neural networks. Okay, first of all, what we have is a neural networks. Okay, and these ये जो भी टॉपिक्स है ना हमारे, ये सारे न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड ही है. Okay, have you heard of this term called artificial neural networks? सुने नहीं सुने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स? हैव यू हर्ड ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स? सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स करें आप. हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म्स? न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स. ओके, वेयर दिस टर्म कम्स फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम, इसका क्या है, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है. ओके, न्यूरल नेटवर्क्स क्या है आपका, न्यूरल नेटवर्क्स एंड व्हाट इज ए न्यूरॉन, आपको मालूम है ना? न्यूरॉन, व्हाट इज ए न्यूरॉन? ओके, दिस इज a neuron, this is a small part of our brain.
ओके, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का स्मॉल पार्ट है, एंड बेस्ड ऑन दिस इटसेल्फ जो हमारा डीप लर्निंग है वो बना था। ओके, based on this architecture only, based on this whole architecture, deep learning was defined. So when we speak about the past of deep learning, there used to be a time where scientists were discovering deep learning, and they were unable to find some what we say, they were unable to find some uh, relevancy to deep learning. Okay, जो भी था एक milestone, they were unable to achieve a milestone in deep learning research, and then they introduced something called neural networks. Okay, which we are looking at, neural networks, and these neural networks are inspired by our biological neural network, right? Neurons अपने biological neurons, it is inspired by our biological neurons. So they named it as ANN, artificial neural network. Okay, and then the part हमारा ANN यहाँ से शुरू होता है, artificial neural network. ओके, समझ में आ रहा ना आप लोगों को यहाँ तक? ओके, okay. Okay, and then we have artificial neural network. Okay, so we have a basic architecture of artificial neural network. It is similar to our uh, देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कुछ इस तरह से वी हैव ए सिंपल डायग्राम है हमारा. ओके, फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ओके, इन ऑर्डर यू टू अंडरस्टैंड दिस, आपको थोड़ा मशीन लर्निंग के टॉपिक्स रिवाइज करना पड़ेगा. सो इन मशीन लर्निंग हम लोग क्या दिए थे? मशीन लर्निंग में आप लोग मॉडल कैसा ट्रेन करते? विद द हेल्प ऑफ डेटा, राइट? डेटा करते आप, एंड देन इनसाइड डेटा यू split the data into x and y, predictor and predictor variable, और predictor है और input variable रहता, right? So we have input variable. Okay, so this input variable represent this input layer. Okay, artificial neural network, it basically consists of these three layers. Okay, ANN consists of three types of layers. Okay, basic idea क्या है? ANN consists of three types of layers. तो द फर्स्ट वन क्या है हमारा, देखिए, वन सेकेंड. ओके, सो द फर्स्ट लेयर इज अवर इनपुट लेयर. इनपुट लेयर क्या करता है? व्हाट डज इनपुट लेयर डज? इनपुट, आपका जो भी डेटा इनपुट है वो आप यू प्रोवाइडेड विद हेल्प ऑफ इनपुट लेयर. ओके, एंड द नेक्स्ट लेयर इज हिडन लेयर. ओके, सो दिस हिडन लेयर कैन कंसिस्ट अप टू मल्टीपल हिडन लेयर्स. ओके, यहाँ पे सिंगल रिप्रेजेंट हो रहा, बट इट कैन, you can also have multiple hidden layers as well. Depending upon your data, you can also have multiple layers of. Okay, and then you'll have this output, which is in the form of a prediction. Okay, in the form of a prediction. Input is nothing but your predictors data. Okay, and then we have a hidden layer, which can consist up to multiple layers. Okay, so the basic math intuition behind this is you provide data to the input layer. Okay, data is provided to the input layer,
along with some weights. Okay, along with some weights क्या है? Okay, so basic data is provided to the input layer along with the weights are nothing but these are the part of data जो भी आपके columns के values आते हैं. That can be for initial you understand weights as these values. Okay, data values uh, data values समझिए आप. Okay, so data is provided to our input layer, and then this data along with some weights goes to the hidden layer. Okay, hidden layer from input layer to hidden layer. Okay, so inside this hidden layer का main concept क्या है मालूम? Hidden layer does something uh, does our computation for us. Okay, जो भी हमारा computation है it basically does couple of jobs जैसे कि आपको feature extraction हो गया. Okay, feature extraction हो गया, and computation, feature extraction, and then activation function. Okay, and then we have a topic called activation function. Okay, so basic computation क्या रहता है मालूम? Finding the relevancy to the data आपका जो है, because the data which we are providing to our input variable is unstructured. क्या है? structured data है. Unstructured data provide करते हैं. Mainly deep learning is used in unstructured data. Okay, text हो गया, images हो गया, उसके लिए हम लोग डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं. राइट, सो दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप इसको कोई लेबल नहीं कर रहे आप. यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी लेबल्स टू इट. ओके, जैसा व्हाट वी डू इन मशीन लर्निंग में यू आर प्रोवाइडिंग लेबल्स टू इट. ओके, ये ये क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग. ओके, विथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, तो क्या है आपके पास? डेटा भी अनस्ट्रक्चर्ड है, टेक्सचुअल डेटा एंड इमेजेस हो गए, ऑडियो फाइल्स हो गए, ऑल. ओके, एंड देन आपके पास यू आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग एनी लेबल्स टू इट. ओके, so in the scenario there needs to be some relevancy to the data which is done inside our hidden layer. ओके, जो भी आपका डेटा में से रिलेवेंसी निकालना है, क्या, व्हाट टू प्रिडिक्ट, फीचर एक्सट्रैक्शन, एवरीथिंग इज डन at our hidden layers. Okay, so there are some mathematical calculation to this as well. Okay, and जो भी computation होता with the help of activation function. Okay, activation function के जरिए से होता आपका computation. And then I guess you know what output layer is. Okay, output layer क्या करता? Prediction. आपका जो भी predicted value है वो आपका आता in the form of output. It comes from the output layer. Okay, so most of the time we denote this as x. One second. X and output as y, and our hidden layer as h. Okay, x and y and hidden layer as h. Okay, and then why we use deep learning? आपके पास machine learning है, and you have inside machine learning में भी आपके पास there are numerous option है, आपके पास clustering technique है, हर एक टेक्निक है, राइट? बट वाई वी यूज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग किस चीज़ के लिए यूज होता, एंड वाई वी यूज डीप लर्निंग? ओके, क्यों यूज करते डीप लर्निंग? बिकॉज देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ मशीन लर्निंग दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग. Okay, so mainly deep learning is used for unstructured data. Okay, data in the form of unstructured data क्या है? Data in the form of
टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया आपका, इमेजेस हो गया, ओके, एंड देन इफ यू लेट्स से वीडियो, इफ यू हैव सम वीडियो फाइल्स, videos and audio files, okay, so based on this itself, so अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर सकते, ओके, एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इट कैन ओनली वर्क ऑन मल्टी क्लासेस, ओके, क्लासिफिकेशन जो है अपना नॉमिनल वैल्यूज पे विथ मल्टीपल क्लासेस पे काम करता, और एल्स और न्यूमेरिकल, okay, but they don't work on unstructured data. Let's say you have a data of this kind, okay, so I have an example of data, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे है डेटा, एंड आई हैव कॉलम सच एज समरी, ओके, यहाँ पे मेरे पास समरी का कॉलम है, दिस कॉलम क्या है देखिए, व्हाट इज दिस कॉलम, इट इज बेसिकली टोटल अनस्ट्रक्चर्ड, राइट, डेटा क्या है मेरा, टोटल अनस्ट्रक्चर्ड है, बट आई हैव सम स्ट्रक्चर्ड कॉलम्स एज वेल, जैसे कि राइट ओवर हियर आउटकम है फेलियर और सक्सेस, क्लास मल्टी क्लास यहाँ पर है, इट ऑल्सो कॉजेस ऑफ फेलियर बैड मार्केट फिट थोड़े है यूनिक वैल्यूज, तो ये आपका मल्टी क्लासेस में आ जाता, एंड देन ईयर फाउंडेड न्यूमेरिकल है, ओके, एंड वी हैव एज एंड जेंडर एज वेल, तो ये स्ट्रक्चर्ड कॉलम्स में आता है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलम्स आर अनस्ट्रक्चर्ड, देखिए ये पूरे कितने अनस्ट्रक्चर्ड कॉलम्स है आपके पास, सो दिस टाइप ऑफ डेटा, इफ व्हेन यू आर वर्किंग विद दिस टाइप ऑफ डेटा, so you will see के machine learning, applying machine learning algorithms is not at all possible, okay, it's not possible at all, so we use deep learning, deep learning algorithms to it, so the real time use cases जहाँ पे आपका वो होता देखिए, what we have in real time use cases is, you might have heard of sentiment analysis, okay, sentiment analysis, okay, and then we also have user behavior, okay, recommendation engine, recommendation engine, these and there are many, face recognition हो गया आपका, okay, so there are many real time use cases of deep learning, okay, so sentiment analysis is mainly used in जो भी political firms है, they use sentiment analysis, and also e-commerces, okay, if you look at e-commerces we have review columns, right, review columns रहते हैं, वो डेटा क्या है आपका, बेसिकली टेक्सचुअल डेटा है, ओके, तो उसमें आप कैसा मालूम करेंगे कि वेदर नॉट ए रिव्यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव है या पॉजिटिव कैसा मालूम करते हैं आप, विद हेल्प ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, बिकॉज इट्स टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके, यू हैव सेंटिमेंट एनालिसिस, एंड देन कमिंग टू अवर यूजर बिहेवियर, ओके, सो फोन्स दे कीप ए ट्रैक ऑफ यूजर बिहेवियर, मोबाइल एप्लीकेशन जैसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो गया, दे कीप ट्रैक ऑफ यूजर बिहेवियर, यानी क्या टच कर रहे हैं आप ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आप क्या टच करें, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती, ओके, टू एनहांस योर यूजर एक्सपीरियंस, उस वास्ते लेते हैं, एंड देन यू हैव रिकमेंडेशन इंजन, ओके, सो रिकमेंडेशन इंजन इज used in both social media platforms, okay, as well as e-commerces, e-commerce पे अगर आप फ़ोन लिए तो कवर का रिकमेंडेशन आ सकता है आपको, सो सिमिलर थिंग्स के रिकमेंडेशन आते, ओके, एंड देन फेस रिकग्निशन, आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस फेस रिकग्निशन, राइट, फेस रिकग्निशन है आपका जो मोबाइल फोन्स में रहता, राइट, मोबाइल फोन्स में रहता, सो एनी डाउट्स क्लियर, कुछ डाउट्स है आप लोगों को, ओके,
सो बेसिक बेसिक आइडिया तो आ गया ना आप लोगों को, व्हाट इज ANN? तो ओके, ANN कंसिस्ट ऑफ दिस थ्री लेयर्स: इनपुट, हिडन एंड आउटपुट। ओके, फिर मैं आपको बोला कि व्हाट इज इनपुट लेयर, व्हाट डज इनपुट लेयर डू, हिडन लेयर क्या करता है, एंड देन आउटपुट आउटपुट लेयर। ओके, एंड देन वी हैव हाँ, वो डेटा में से फीचर एक्सट्रैक्शन में आता हो। ओके, सो सो टुमारो we will start MLP. Okay, multi-layer perceptron. Well, I will rewind this class. Okay, here I'll take you to what a perceptron is and how we do multi-layer perceptron. Okay.